A very good morning to all of you. Welcome to today's newspaper analysis. There have been a slight change in today's analysis. I am not uh, here with PPT and I'm not starting with the usual page which we used to start because the setup has changed a little bit for me. There have been certain issues with respect to electricity at my house, so I had to do adjustment whatever I can. So let's talk about the very talked about topic, that is Trump effect. राइट तो अब हम बात कर ही लेते हैं इस बारे में बिकॉज इट्स बीन हाई टाइम एवरी सिंगल डे देयर इज न्यू लाइक देयर इज सम न्यू development in this thing and I think that we should start covering it. So recently China USA has uh, slammed China with 104% taxes, and that is deepening, that led to deepening of uh, trade war between the two countries. ठीक है, तो अब बात करते हैं कि क्या है। यूएस ने ट्रैफिक इम्पोज किया है, यूनाइटेड स्टेट्स ने ट्रैफिक इम्पोज किया है। यूएस हैज इम्पोज ट्रैफिक ऑन सेवरल कंट्रीज, राइट। जैसे कि कौन कौन सी कंट्रीज हो गई? इंडिया, वियतनाम, बांग्लादेश, चाइना, यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड किंगडम, जापान, एवरी सिंगल कंट्री के साथ में जो भी यूएस की ट्रेड पार्टनर्स है, यूएस ने टैरिफ इम्पोज किया है, राइट। तो इंडिया के किस एक्सपोर्ट सेक्टर पे उसका इम्पैक्ट पड़ा है? कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसपे उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है? तो सबसे पहला जो इम्पैक्ट पड़ रहा है ना, वो तो पड़ रहा है हमारे स्टील सेक्टर पे। ये हम कैसे बता सकते हैं? देखिए 2018 में भी ये सेम चीज हुई थी और 2018 में भी इम्पैक्ट बहुत हुई थी ये इंडस्ट्री। अब अगेन वापस से, क्योंकि ट्रम्प गवर्नमेंट है वहां पे, तो अब वापस से सेम टैरिफ्स लगाए गए हैं और ये चांसेस हैं कि वापस से सेम जो इम्पैक्ट है वो होगा। और एक और सेक्टर है, दैट इज एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, so this tariff escalation has led to increased cost for Indian business, reducing their market competitiveness in USA। ये बात समझ में आ गई। यही एक पूरा रीजन है कि अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी यही है ना कि अगर आज मैं मार्केट में जाती हूँ, लेट्स से मैं एज एन इंडिविजुअल मार्केट में जाती हूँ, वहां के किसी भी स्टोर में जाती हूँ, लेट्स से मैं वॉलमार्ट में जाती हूँ एंड आई नीड टू बाय सम स्पाइसेस एंड मी बीइंग एन इंडियन ओरिजिन पर्सन, इफ आई एम गोइंग टू अ सुपर मार्केट एंड आई कैन सी कि दो तरीके की टर्मरिक मुझे मिल रही है। ठीक है, लेट्स से टर्मरिक है, एक जो है वो मुझे मिल रही है $10 की और एक जो है वो मुझे मिल रही है $5 की। सो एज अ कंज्यूमर आई वुड डेफिनेटली गो फॉर समथिंग जिसका जो प्राइस है वो कम है। मेरे अंदर ये सेंस ऑफ पेट्रियोटिज्म तभी तक होता है जब तक, जनरली स्पीकिंग, जब तक हमारी जेब से पैसे नहीं जा रहे हैं उस पेट्रियोटिज्म के। जब हमारी जेब से पैसे जाते हैं तो हम सबसे पहले यही चूज करते हैं कि यार कौन सा सस्ता है, राइट। और ये डिफरेंस क्यों आएगा? ये हो सकता है किसी यूएस बेस्ड कंपनी हो और ये हो सकता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की कंपनी हो। ये डिफरेंस क्यों आएगा? डिफरेंस आएगा क्योंकि इस गुड्स के ऊपर एडिशनल 27% का टैक्स भी है। तो इसलिए, सॉरी नॉट, लाइक ये रिवर्स हो गया आई बिलीव। ये इंडियन है, ये यूएस की है और इसके ऊपर 27% का टैक्स भी है। ये मिसाल के तौर पे एक बात की गई है। अच्छा, इंडिया हैज ऑल्सो लॉस्ट इट्स जर्नलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस स्टेटस। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि इंडियन गुड्स जो है, they will no longer receive duty free access to the US, which increase the cost of exports even more। इंडिया का क्या रिस्पॉन्स आया है? इंडिया हैज इंट्रोड्यूस्ड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 aiming to boost export, reduce dependence on single market and reach the target of 2 trillion in exports by 2030। India is also focusing on diversifying its exports market and improving domestic manufacturing through initiatives like PLI schemes, which in sectors like electronics, textile and steel। अब ये एक ग्लोबल ट्रेड वॉर भी स्टार्ट हो गई।
हम उसके बाद उस आर्टिकल पे आएंगे, मैं एक ओवरव्यू दे रही हूँ आपको पूरे सिनेरियो का। Particularly US और चाइना के बीच में, what is it? So it has created a turbulent trade environment between these two countries. This has led to countries imposing tariffs on each other, disrupting global supply chains and raising the cost of goods. India is facing both the challenges and opportunities in this environment. How is it that? While it may face high tariffs on its export, there is potential to benefit by becoming an alternative supplier as global chains shift away from China. So there is an alternative to become China's plus one. Right. But then, of course, there is because the tariffs are higher and because India is facing this challenge of high tariffs on exports. So there is a potential, like there is a chance that the prices of the export will go higher, the industry will suffer. But there is an opportunity as well. In context to, like, if we'll talk about Indian economic or like economics or international relations, the repercussion of such a global trade tensions are very critical. These tensions can disrupt economic growth, they can affect the employment, and require India to rethink its trade policies. India's diplomatic efforts are focused on expanding trade relations with other countries like the groupings of the EU, यूरोपियन यूनियन के साथ काम करने का या फिर आसियान कंट्रीज हो गई या अफ्रीका भी एक बहुत अफ्रीकन सब कॉन्टिनेंट भी इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट हो सकता है जिससे उसका रिलायंस यूएस एंड चाइना से कम हो जाए। देखिए इंडिया ने अपने एनर्जी सेक्टर को डाइवर्सिफाई करने का स्टार्ट कर दिया है। ये हमने कल डिस्कस करा था कि कैसे वो श्रीलंका के साथ टाई अप कर रही है, कैसे और भी कंट्री के साथ टाई अप कर रही है, जिससे वो एनर्जी सिक्योरिटी एक सिंगल कंट्री डिपेंडेंट नहीं हो। इट हैज टू बी मल्टीपोलर, इट हैज टू बी डाइवर्सिफाइड। And this is the same strategy which India is trying to follow with their export industry as well. I do not want to be dependent on just one country for my exports. My textile industry will not be dependent on just one country. It will, like, if USA is imposing tariffs on us, we'll sell the same goods in Africa or South America, right? So it is trying to diversify its resources, like export market. तो अच्छा ये ट्रेड वॉर एक और इशू लेके आता है इकोनॉमिक सिक्योरिटी की। क्या मतलब है इस बात का? जैसे डिसरप्शन इन ग्लोबल ट्रेड इफेक्ट ने इफेक्ट करा है इंडस्ट्रीज को जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत वाइटल होती हैं, जैसे डिफेंस होगी, फार्मास्यूटिकल होगी। So the ongoing trade dispute have far-reaching implications on India's trade policy. कैसे फार्मास्यूटिकल को कैसे इसने इम्पैक्ट करा और क्या करा उसके बारे में हम बात करते हैं। एक चीज अब हम आ जाते हैं कि इस आर्टिकल के बारे में हम बात करें कि इस आर्टिकल में क्या है। ये बात कर रहा है कि ग्लोबल टेस्ट जो ये ट्रेड टेंशन चल रही है उसका रिसर्च और इनोवेशन सेक्टर में क्या इम्पैक्ट होता है, हम उसकी बात करते हैं। एक तो सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट ऑन रिसर्च इंडस्ट्री है वो ये है कि इंक्रीज्ड cost of imported research material and equipments. Many research sectors, especially in areas like pharmaceutical technology, engineering, they all rely on imported materials, equipments, and components from countries like United States and China. The introduction of tariffs on these imports increases the cost of essential materials used in the R&D. For instance, let's take an example. Indian researchers working in the fields like biotechnology or electronics, they can face higher costs for accessing state-of-the-art technology or laboratory equipment, impacting their ability to conduct like they have to conduct cutting-edge research, right? अब ग्लोबल ट्रेड टेंशन से और एक चीज डिसरप्ट हुई है, वो हुआ है इंटरनेशनल कोलैबोरेशन ऑफ रिसर्च। The United States, China, and Europe have been key players when we talk about global research. And tariff wars may lead to the restrictions on joint research projects, especially in the field of innovation and technology, which is a very prominent sector within this particular area, right? These disruptions can hinder knowledge exchange, access to global databases, and cooperative research agreement, limiting India's participation in leading edge scientific discovery and technological advancement.
Again, India should focus on self-reliance. Again, there is a conversation that Atmanirbhar Bharat or self-reliant India. This will again come in the light, and this will again be the course of action. कि जब जितना सेल्फ रिलायंट होंगे हम जितना होंगे हम उतना ज्यादा हमारे लिए अच्छा होगा क्योंकि the economic uncertainties caused by trade wars may also lead to reduction in research fundings from global companies. And this is what this article has been talking about, that there is a chance that there can be an exodus of expertise. The people who are working in the United States of America, who are actually working in the research field, there is a chance that they will not have funding for their own research projects. And this can be the reason why they will try to shift from that particular country to other countries to use their expertise. And this is what the author has talked about with respect to exodus in expertise. Particularly in like there can be reduction in research funding from global companies and academic institutions, particularly in high risk and high investment sectors like space research, biotechnology, and AI. Countries facing economic challenges may cut their fundings to research initiatives and private corporations that can lead to the reduction of their investment in innovation. India's research institutions, especially those relying on external funding, might experience financial constraints. This will also have an impact on the startup culture of India, which just started to boo up, right? Like boost up. Startups in India are burgeoning research and innovation sector, particularly in tech, healthcare, and pharma, may find it harder to source funds or technology. Okay. Many Indian startups rely on affordable international technology. So they can be like because of this war and tariff hike, they can be relay in technology transfer or they can be higher operational cost. So अब देखिए सिर्फ टैरिफ इंक्रीज हुआ है कुछ सेलेक्टेड आइटम्स पे बट उसका इम्पैक्ट हर जगह है बिकॉज नाउ एवरीवन इज वेरी सस्पिशियस ऑफ द फैक्ट कि अब अगला कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा और उसकी वजह से एक अनसर्टेनिटी का माहौल है और अनसर्टेनिटी का माहौल में कभी भी कोई भी बिजनेस फ्लॉरिश नहीं करता हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि क्या हालत है शेयर मार्केट्स की वर्ल्ड वाइड दे हैव बीन अ ब्लडी मंडे दे हैव बीन अ वेरी डार्क ट्यूसडे एंड जितनी भी टर्मिनोलॉजीज बोलनी है आप बोल दीजिए अब जा करके थोड़ा आफ्टर लाइक टुडे लाइक आफ्टर 3 days अब जा करके थोड़ा सा मार्केट उठा है बट वो भी पूरा रिकवर नहीं कर पाया है ना तो ये एक बहुत अनसर्टेन टाइम्स है व्हेन इट कम्स टू ग्लोबल cooperation of trade and industries and we'll have to look at it as a UPSC aspirant in the same light. अब दूसरे आर्टिकल की बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत एक तरीके से आप लैंडमार्क जजमेंट कह लीजिए विद रिस्पेक्ट टू फेडरलिज्म आया है which is on the Tamil Nadu governor. Supreme Court pulls up the Tamil Nadu government said deadline to clear the bills. ये क्या है कैसे है इसके बारे में बात करते हैं और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट जजमेंट है तो हम पहले गवर्नर के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या है एक तरीके से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए कर लेते हैं हम बात इस जजमेंट में तो सिर्फ इतना ही कहा गया है देखिए कि जो गवर्नर के पास में विथहोल्ड करने की पावर डेफिनेटली है बट क्या वो मतलब पॉकेट वीटो को जेब में रख रख के बिल को बैठा ही रहेगा और कभी पास नहीं करेंगे गवर्नर तो ऐसा तो नहीं है एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू विल हैव टू पास द बिल देयर कैन बी सम अरेंजमेंट मेड विद रिस्पेक्ट टू द सेम phenomena right so the roles and powers of governor in India have been subject of considerable judicial scrutiny कैसे particularly in recent Supreme Court decision की अगर हम बात करते हैं तो उसके बारे में बात करते हैं we'll have to understand the relationship between the governor and state legislation. So the relationship between governor and state legislature is a crucial as it touches upon the key aspects of Indian federalism. The separation of power and the role of judiciary in upholding constitutional principles. The Constitution of India under Article 153 to Article 167 outlines the power and functions of the governor, designating them as the constitutional head of the state. Though the governor's actions are largely guided by the advice of Council of Ministers as per the Article 163. However, the governor is also vested with certain discretionary powers, which the courts have interpreted in this
in various landmark judgments and as well as in this judgment as well. One of the like one of the significant ruling of Supreme Court which came out, which clarified that a governor does not have absolute power to withhold assent to the bills indefinitely. According to Article 200, the governor has three options when the bill is presented to him or her. पहली बात तो ये है आप assent दे दो, give assent. Second is you can uh, withhold the assent. And third is to reserve the bill for president's consideration. ठीक है. The court emphasized that the governor's power to withhold assent should not be exercised arbitrarily for an extended period, as it could undermine the functioning of these state legislatures. Furthermore, the court ruled that if a governor rejects a bill, it does not equate to its permanent rejection, which was earlier clear as well. The Supreme Court has made it clear again. The legislature can reintroduce the bill and compel the governor to reconsider it. The ruling underscores the supremacy of the legislature in the law-making process while acknowledging the governor's role in ensuring constitutional propriety. Right. तो ये जो एक डिबेट है ये जो like there have been debates going on that governor is used as a tool, like it has been there have been instances as well where the governor is being used as a tool to control the functioning of state legislatures and many things, right? तो ये एक बहुत अच्छा जजमेंट है जहाँ पे फेडरलिज्म की नींव के बारे में वापस से बात करी गई है, जहाँ पे गवर्नर की पावर्स के बारे में वापस बात करी गई है, जहाँ पे लाइक जो एक सुप्रीमिटी ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स व्हेन इट कम्स टू द लॉ मेकिंग प्रोसेस है उसके बारे में बात करी गई है. तो आज के लिए बस इतना ही. हम आपसे बाद में कल मिलते हैं विथ न्यू न्यूज़पेपर एनालिसिस. थैंक यू सो मच. हैव अ गुड डे.